Hello dear students, this video lecture is in continuation with our fifth unit. In first lecture we already discussed the concept of center of mass and how the internal and external forces act on a system. In this particular video lecture I am going to discuss with you how to calculate the center of mass of two-point system. Let us start. The topic is center of mass of two-particle system. Why two-particle system is important? Because if we can calculate center of mass of two-particle system, then it means we can calculate center of mass of n-particle system. For calculating center of mass of two-particle system, let us consider a coordinate system x, y and z. And in this coordinate system we are having two masses m1 and m2, and position vectors of these masses be r1 and r2. We know that the center of mass will exist on the line joining centers of these two masses, and let us say capital R is the position vector of center of mass. Apart from this, let us say F1, F2 is the external force on M2, F1 is the external force on M1, while capital F12 is the force on 1 due to 2, and F21 is the force on 2 due to 1. Now if I will apply my equation of calculating velocity from position vectors to R1 and R2, then I can calculate like V1 can be written as dr1 by dt, as velocity is defined as rate of change of position and r1 is the position of first mass, r2 is the position vector of second mass, so dr1 by dt is representing v1. Similarly, v2 is represented by dr2 by dt. Let us say acceleration of if we are interested in finding the acceleration of m1, then we can find the acceleration of m1, or yes, consider that acceleration of particle 1 is a1 and consider acceleration of particle 2 is a2. Then we know that ma1 must be equal to f1 plus f12, that is net force on one particle. m1, mass of one particle, into a1 is equal to f1 plus f12, where small f1 and f12 is total force on first particle. Similarly, on second particle m2, I can write force m2a2 must be equal to f2 plus f21, force on net force on particle 2. One force is f2, one force is f21. Now if I will add these two equations, I can write m1a1 plus m2a2 is equal to f1 plus f12 plus f2 plus f21. And as we discussed in my previous lecture, that internal forces f12 and f21, they are always equal and opposite, so they will cancel each other, and f1 plus f2 is giving me total external force on system. When I am having total external force on system, now the total external force of system, if I consider it as a single system, then total external force must be equal to total mass divided by A, that is acceleration of system. Let us represent this A by capital A, the acceleration of system. So from this equation we can see m1a1 or
F1 plus F2 is equal to M1 plus M2A. We can find the acceleration of entire system. So this is the key point here. If acceleration of entire system into M1 plus M2 is equal to M1A1 plus M2A2, this is your main equation. If you reached on this result, then you can figure out the coordinates of center of mass, because we can write acceleration in terms of position vector. You know that v1 is equal to dr1 by dt, v2 is equal to dr2 by dt. In the same manner, if you will extend the differentiation, you can write a1 which is equal to dv1 by dt, which is equal to d square r1 by dt square. So acceleration is defined as first derivative of velocity, or acceleration is defined as second derivative of displacement. In the same manner, you can write a2 is equal to d square r2 by dt square. So we can put the values of accelerations of a1 and a2 in terms of r1 and r2 in our equation. Let us say this equation number 4, and in place of a, what is a? A is acceleration of system. For different masses, I am having a1 and a2, and I can write a1 and a2 in terms of r1 and r2, which are predefined position vectors of masses m1 and m2. जो आपके a1 और a2 हैं वो m1 और m2 के एक्सेलरेशन है, और उनकी पोजीशन वेक्टर r1 और r2 तो हमें पहले से ही पता है, तो हम अगर उनका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. लेकिन जो ये क्वांटिटी हमने कैपिटल A लिखी है, कैपिटल A इनटू में टोटल मास ऑफ सिस्टम, ये जो हमने कैपिटल A इंट्रोड्यूस की है क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. तो यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम से कंसेप्ट आया कि अगर इस एक्सेलरेशन को हम किसी पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव लिखें तो वो पोजीशन वेक्टर किसका होगा? वो पोजीशन वेक्टर ना तो r1 का होगा और वो पोजीशन वेक्टर ना ही r2 का होगा, वो पोजीशन वेक्टर आपका सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का होगा. यानी कि जब भी कभी हम सिस्टम को लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिस्टम के एक्सेलरेशन को लेकर कि वो कौन से पॉइंट का मोशन है जिससे हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो वो हमारे को किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. तो जब आप ए एक्सेलरेशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डी कैपिटल आर d square capital R by dt square, then you know that this is the acceleration of center of mass into m1 plus m2. और यहाँ पे आप m1 a1 और m2 a2 की जगह क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पे लिख सकते हैं d square v1 square by dt square, m1 as it is रह जाएगा, प्लस m2 और a2 की जगह आप लिख सकते हैं d square, सॉरी जब हम d square लिख रहे हैं तो हम पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखेंगे ना, डी स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय dt स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर r2 स्क्वायर बाय dt स्क्वायर. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? हम डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर डिफरेंशियल ऑपरेटर को कॉमन ले सकते हैं एंड विल गेट m1 r1 प्लस m2 r2 d square by dt square of m1 r1 m2 r2 is equal to d square by dt square of r और साथ में m1 plus m2. तो अगर अब मैं यहाँ से ये वाले मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में ले जाऊँ और डबल डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑपरेटर से डबल डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑपरेटर कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा r, ये m1 plus m2 जो मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का. ओके, एंड प्लीज टेक केयर कि ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास r1 r1 प्लस m2 r2 आया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्पेशल केसेस डिस्कस कर देता हूँ. सबसे पहले तो आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप r को क्या लिख सकते हो? आप r को लिख सकते हो rxi प्लस ryj इज इक्वल टू, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो m1 r1 का भी x कंपोनेंट होगा और r1 का भी y कंपोनेंट होगा, rxi प्लस ryj. सिमिलरली यू कैन राइट m2
R2xi plus R2y j y कॉम्पोनेंट और x कॉम्पोनेंट और डिवाइड बाय में डिवाइड m1 प्लस m2। तो अगर हम इनकी कॉम्पोनेंट फॉर्म में इनको अलग अलग लिखे तो हम लिख सकते हैं दैट Rx इज इक्वल टू m1 R1x, या R1x को हम सिंपल अगर xi और R1y को हम सिंपल x1i और y1j लिखें तो ये ज़्यादा सिंपल रहेगा, और R2 के x कॉम्पोनेंट को हम x2 लिख देते हैं और R2 के y कॉम्पोनेंट को हम y2 लिख देते हैं। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का सिंपल क्या आ जाएगा, m1 x1 प्लस m1 y1, नहीं i वाली टर्म्स लेंगे ना हम, x1i और ये, तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये मैंने i कॉम्पोनेंट कॉमन ले लिया rx के लिए, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिखते rxi प्लस ryj और i वाली टर्म्स को आप एक साथ लिखते तो m1 x1i m2 x2i डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और साथ में यहाँ पे आप लिखते i, ऐसे ही आप लिखते m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 j। तो इस तरीके से आप इस वेक्टर इक्वेशन को m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 को लिख सकते हो r xi प्लस ry j, और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को इफ यू विल कंपेयर देन यू कैन फाइंड दैट हम अपने सेंटर ऑफ मास वाले फार्मूले को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। r का x कंपोनेंट हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और सिमिलरली r का y कंपोनेंट हो जाएगा m1 y1 m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, moreover if your m1 is equal to m2 special case then your formula will reduce to rx is equal to x1 plus x2 by 2, क्योंकि m ऊपर से कॉमन और नीचे 2m हो जाएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और सिमिलरली आपका ry का फार्मूला क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 by 2, यानी कि जो आपका टोटल फार्मूला है r का वेक्टर फॉर्म में इट विल रिड्यूस टू r1 प्लस r2 डिवाइड बाय 2, विच इज इंडिकेटिंग कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है अगर दोनों मासेस इक्वल होंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, लाइक ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।